स्वागत है आपका एक बार फिर से कैमरामैन इंडिया चैनल पे, जहाँ पे हम आपको देते हैं टिप्स ट्रिक्स और करते हैं ढेर सारे कैमरास की अनबॉक्सिंग। और आज का एपिसोड हमारा है व्लॉगिंग कैमरास के ऊपर। तो कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है व्लॉगिंग के लिए, आइए हम लोग जानते हैं। एंड कि वीडियो लॉगिंग होता क्या है। वीडियो लॉगिंग या व्लॉगिंग इज़ अ न्यू ट्रेंड जो बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। एंड दे कीप ऑन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड स्टफ एंड पुट देम ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ कॉल्ड वीडियो लॉगिंग। अगेन देन आपका वीडियो लॉगिंग इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला, जैसे आप यू जस्ट कैरिंग योर कैमरा एंड टॉकिंग टू ईच अदर, और आगे चल रहे हैं एंड लोग आपके साथ चल रहे हैं एंड जस्ट you keep on talking, sharing your experiences on your social media. That is one type of vlogging. And the other type of vlogging is combining that same experience along with some cinematic shots, drone का shot लेकर के, या creative shots like good cinematic shots आप उसको उसमें include करते हैं. So these two types of vlogging are there. So based on these two types of vlogging, I will suggest you few cameras as to what you can buy and what you have to think more about it. So आइए, सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मैं बता सकता हूँ फॉर व्लॉगिंग इज़ द मोस्ट बेसिक, शायद आपको ही पता होगा, इज़ योर सेल फोन। यस, आपका सेल फोन आपका बेस्ट कैमरा है बिकॉज इट स्टेज विथ यू ऑल द टाइम। एंड जिस तरह देखा जाए कि आजकल जो नए कैमराज फ़ोन कैमराज आ रहे हैं, दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। उनकी फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा फ़ीचर्स हैं उनके पास। एंड दे शूट 4K, उसमें स्लो मोशन भी आ गया है। लुकिंग एट द रिसेंट फ़ोन्स, दे शूट 960 फ्रेम्स। दैट्स क्वाइट आउटस्टैंडिंग फॉर अ फ़ोन कैमरा। एंड लाइक बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं एंड आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मोरओवर इसमें आपको इनबिल्ट स्टेबिलिटी भी आजकल आ जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, गुड अपर्चर, गुड लाइटिंग, लो लाइट कंडीशंस में आप वीडियोस बना सकते हैं। एंड ये हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा ये चार्ज होता है। सो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग और इफ़ यू आर इन अ बजट, देन योर फ़ोन इज़ द बेस्ट कैमरा यू हैव विथ योर सेल्फ। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए। एंड अगर आपको स्टेबिलिटी में कुछ इश्यूज़ है एंड यू वांट टू स्पेंड सम लिटिल मनी, देन यू कैन गो फॉर वन ऑफ दीज स्टेबलाइजर्स विच यू कैन सी आई हैव। ये है Zhiyun का स्मूथ क्यू स्टेबलाइजर। इट इज़ क्वाइट cheap, available in the market, and does the work quite beautifully. So moving on to the next part, apart from the phone cameras, if you are looking to up game your vlogging, so you need a dedicated camera. आपको एक dedicated camera की ज़रूरत है। सो डेडिकेटेड कैमरा फॉर व्लॉगिंग, आपको उसमें कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसमें क्या होगा। फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट थिंग, आपको उसमें एक फ्लिप आउट स्क्रीन मैंडेटरी है। इफ़ देर इज़ नो फ्लिप आउट स्क्रीन, देन व्लॉगिंग बिकम्स क्वाइट टायरसम। बहुत प्रॉब्लम होगा आपको बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम योर सेल्फ इन द कैमरा, यू डोंट नो वॉट यू आर रिकॉर्डिंग। सो फ्लिप आउट स्क्रीन इज़ अ मस्ट। एंड nowadays the new cameras, they are all giving out flip out screens, both in the point and shoot range and in the DSLR range. So look out for the flip out screen. I will suggest you a few cameras with the flip out screen obviously, and let's go on with the flow. So first camera which I would suggest you is in the point and shoot mode, which is the best selling camera for vlogging in the market, and it's quite in the budget for most of us. It's the Canon G7X Mark II. Yes, this camera, ये कैमरा जो आपका है, ये 20.1 मेगापिक्सल का है एंड ये 1 इंच सेंसर वाला कैमरा है। एंड दिस रिकॉर्ड्स वीडियो ऑफ फुल HD रेजोल्यूशन एट 50 फ्रेम्स पर सेकेंड इन PAL एंड 60 फ्रेम्स पर सेकेंड इन NTSC. सो इट्स क्वाइट अ गुड कैमरा। इसका फ्लिप आउट स्क्रीन बहुत अच्छा है, इसमें एक टच स्क्रीन इन्वॉल्व किया गया है, टच स्क्रीन इंक्लूड किया गया है। एंड ये टॉप माउंटिंग, मतलब ये फ्लिप आउट होता है इन ओवर द कैमरा, नॉट साइडवेज। सो इट्स गेट्स क्वाइट गुड टू लुक एट सिंस आप कैमरा की तरफ जब देख रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग योर वीडियो. So if you're looking at the screen to observe yourself how you're looking and what your content is like, so it's like basically looking into the lens, and it makes it much more appealing कि आप उस वीडियो को आई कॉन्टैक्ट के थ्रू बना रहे हैं। मोरओवर अगर वो फिर आपका फ्लिप आउट स्क्रीन साइडवेज है तो इट्स लाइक जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ साइड लुकिंग थिंग. So that is one point there for with the Canon G7X Mark II, which is retailing for about rupees 43,000 in the market.
and it is one of the best choices for budget. Second thing, in the point and shoot, if you want to really upscale, like go for one of the best YouTube cameras for vlogging or even making different videos for YouTube and making travel videos, I would suggest you to go blindfold. आँख बंद करके आप ले सकते हैं. If your budget is in that range, I would suggest you Sony RX100 Mark V. This camera is a beast for vlogging. Yeah, it is the 1-inch sensor वाला कैमरा जो आपका point and shoot में आता है generally. This is the same size as the previous camera which I told you about, the Canon G7X Mark II. The Sony RX100 Mark V is one of the best in the business. क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको एक फ्लिप आउट स्क्रीन मिलता है, बट माइंड इट इसमें टच स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, एंड इट शूट्स 4K. यस, इट शूट्स 4K, एंड सोनी का इसमें एक प्रोप्राइटरी फीचर है विच इज़ कॉल्ड द HFR, दैट इज़ हाई फ्रेम रेट वीडियोज़ which it can shoot in full HD up to 960 fps. Can you believe it? 960 fps in full HD. But then again, थोड़ा ड्रॉबैक है कि 960 fps में when you are making videos, quality थोड़ा कम हो जाता है, but still it's a big thing. You can go for 120 fps, you can go for 240 fps, you can go for 480 fps also in this camera and get that rich looking slow motion videos that you have always dreamt of. But then again, price is a matter. This camera comes at a price of around 75 to 79,000 rupees online and offline. You can just check out your market to get the best price of it. And इसमें आपको 315 focus points मिलते हैं. So there's a hardly less chance your video goes out of focus. It will focus in a snap, this camera, because it's one of the best. Most of the YouTubers are using this camera. And if you are seriously looking for just making YouTube videos, vlogging, then you can definitely go for this camera because it also gives you slow motion video recording. Coming to the next point, after the point and shoot, which I can suggest, I'll go to the DSLR market as to what camera you should buy. And with the DSLR thing coming in my mind, DSLR में आपको ज़्यादा कुछ offerings दूसरे ब्रांड्स में नहीं है उतने सारा, तो आई वुड सजेस्ट यू फ्रॉम कैनन मोस्टली. सो द फर्स्ट थिंग विच विल कम फॉर व्लॉगिंग इज़ लाइक, सिंस बिफोर कमिंग टू दैट आई वुड टेल यू लाइक DSLR आर क्वाइट बल्की. DSLR थोड़ा बल्की है एंड हैवी होता है फॉर ट्रैवलिंग एंड डूइंग वीडियो व्लॉगिंग. सो compared to point and shoot, if you are like up game and use it for other purposes as well, then you can go for DSLR cameras to make your vlogs and do other stuff as well. So and be more creative with different lenses, filters जो आप इसमें लगा सकते हैं. So the first camera which comes into my mind is the Canon 200D. Yeah, it is a new offering from Canon 200D DSLR. It's a 24.2 megapixel का ये कैमरा है. उसका सेंसर APS-C साइज़ का है. So sensor is quite big, बड़ा सेंसर है, एंड आपको उसके साथ मिलता है, सिंस सेंसर बड़ा है तो आपको लो लाइट सेंसिटिविटी इज़ गुड. इट विल कैप्चर मोर लाइट इन दैट. जस्ट पेयर इट विद अ गुड लेंस, स्पीड फास्ट लेंस एंड वाइड एंगल लेंस, देन यू आर गुड टू गो विद दिस कैमरा. टॉकिंग अबाउट दिस Canon 200D कैमरा, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फ्लिप आउट स्क्रीन. And Canon का जो proprietary focusing technology है which is the latest one, which is the dual pixel autofocus, is included in this camera. Actually it starts with this camera and then it goes up with the much more expensive cameras in this lineup, जिसमें dual pixel आता है, dual pixel autofocus होता है. So 200D is the entry point of this video logging camera with dual pixel autofocus. Pair it with a good camera, with good lens, and you're good to go. और एक और आपको मैं बात इसका बता देता हूँ. दिस कैमरा सपोर्ट्स आपका फुल HD वीडियो एट 60 fps एंड इसमें 9 क्रॉस टाइप फोकसिंग है. सो इट्स क्वाइट गुड. ब्लॉगिंग में आपको फोकस पॉइंट्स इज सफिशिएंट इफ़ यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, एंड इट्स लाइक quite lightweight and very small and compact. So it's a good choice if you go for this camera as well. But then again आपको
अगर कुछ और बेटर कैमरा चाहिए, कुछ और क्रिएटिव होना है, लाइक मोर सिनेमैटिक शॉट्स यू वांट, then there is one camera which is called the best camera for YouTubing is the Canon 80D. The Canon 80D is a beast in DSLR cameras for YouTubers and vlogging and making different kinds of videos. It has got the APS-C sensors, again like the 200D, and this also is of 24.2 megapixels. This also shoots in 1920 1080p at 60 fps, तो ऑलमोस्ट सेम है 200D के जैसा ही, बट द डिफरेंस जहाँ आता है इज़ योर आपका जो इसका अंदर का प्रोसेसर है, दैट इज़ क्वाइट अपग्रेडेड फ्रॉम दी, नॉट क्वाइट अपग्रेडेड बट डिफरेंट फ्रॉम दी 200D, एंड इसमें आपको 45 क्रॉस पॉइंट्स मिलते हैं फोकसिंग के, कंपेयर टू योर 200D विच हैड ओनली 9 क्रॉस फोकस पॉइंट्स, एंड इसमें आपको क्रॉस टाइप 45 मिलते हैं. एंड सिंस this camera is like primarily built for video logging, making videos for YouTubers and other stuff, this camera includes a dedicated headphone jack, so आप monitor कर सकते हैं कि आप क्या record कर रहे हैं, how clear is your audio, and since it has also got a microphone input, whereas the other two cameras which I suggested, the point and shoot, they don't have a dedicated microphone jack, तो इसमें आपको dedicated microphone jack मिल जाएगा, so no need of buying an expensive microphone just to sync audio later. With this you can directly sync, and moreover this video what we are shooting right now is being shot on a Canon 80D with a basic lens, and you can see the quality of that. It's quite fast in autofocusing and different stuff, so this is like one of the best options for you to video log, but remember it's quite heavy, थोड़ा सा size बड़ा है, and it's built like a tank, so it's quite strong. It will take a few bumps, so not a big deal. And so that was Canon 80D. Moreover, again, if you want to go for like अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग फुल फ्रेम में भी वीडियो लॉगिंग बना रहे हैं, बट इससे पहले कोई ऐसा फुल फ्रेम कैमरा नहीं था जिसमें आपको एक फ्लिप आउट स्क्रीन मिले जिससे वीडियो लॉग बन सकता है. बट रिसेंटली Canon has launched the new 6D Mark II. That is also a very good camera, priced around rupees 1.5 lakhs with I don't remember the kit, which kit you're getting that price. It's also like you get 45 cross point focus in that, and this also shoots in 1080p. It doesn't shoot 4K, which is actually a disaster. Canon should have included 4K mode in this camera, because आजकल ये phones 4K shoot कर रहे हैं. Why not a full frame camera worth rupees 1.5 lakhs? So that is one drawback of that camera, but with the big sensor and a good quality lens, you will get great quality in that for video logging as well. But remember, it's a full frame camera, the camera is quite expensive, and the lens which support it, that is also going to be quite expensive compared to the APS-C offerings. So I would suggest you, if you want to go for a DSLR with good quality, go for the Canon 80D, because the rest of the cameras also which I've told, they are also equivalent and they give good quality. But if you are going for the best in video making for YouTube, that is the 80D, and then if you want portability with a few of the features of the 80D, then go for the Canon 200D. And जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपका G7X Mark II and RX 100 Mark V is like top of the game for vlogging. Even with that small sensor, autofocus is quite smooth in both of them, so you can look for that too. So tell us, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं अपने व्लॉग्स के लिए, एंड अगर कोई आपके माइंड में कोई दूसरा कैमरा है जो व्लॉगिंग के लिए आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स. टिल देन, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा. शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कैमरामैन इंडिया को फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ कमिंग इन द फ्यूचर. थैंक यू.